भास्वती द्वितीयो भागः द्वादशवर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम् पृष्ठसङ्ख्या 72 नवमः पाठः मदालसा। प्रस्तुत पाठ जम्मू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त आचार्य वेद कुमारी घई द्वारा रचित पुरंध्री पंचकम नामक रूपक संग्रह से संकलित किया गया है। पुरंध्री पंचकम आधुनिक नाट्य परंपरा में एक सामयिक विषयों से संबंधित रोचक एवं शिक्षाप्रद रूपकों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में पुरंध्री पंचकम के तृतीय रूपक मदालसा के कुछ अंशों का संकलन किया गया है, जिसमें राजकुमार ऋतध्वज तथा मदालसा के संवाद के माध्यम से राजकुमारी मदालसा के स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता का एक नए परिप्रेक्ष्य में सुंदर चित्रण किया गया है। पृष्ठ संख्या 73 ततः प्रविशति प्रकृति सौंदर्यम अवलोकयन् महाराजस्य शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वजः। ऋतध्वजः अहो शोभनं गन्धर्वराज विश्वावसोः राजोद्यानम् आम्रमञ्जरीणां परां शोभां दृष्ट्वा कोकिलानां च मधुरवचांसि श्रुत्वा कस्य यूनो हृदयं सहसा उत्कण्ठितं न भविष्यति। वामपार्श्वे रमणीनाम् आलाप इव श्रूयते, अत्रैव स्थित्वा श्रोष्यामि। कुण्डला सखी मदालसे, त्वं तु केवलं विद्याध्ययने एव रता, कियन्तं कालं यावत् ब्रह्मचर्यव्रतं धारयिष्यसि? मदालसा ज्ञानोदधिस्तु अनन्तपारो गभीरश्च। मया सागरतटे स्थित्वा कतिपय बिन्दव एव प्राप्ता अद्यावधि। कुण्डला विनयशीले, विद्या ददाति विनयम्, अत एव एवं भणसि। कुलगुरु तुम्बरु महाभागैस्तु गन्धर्वराजाय अन्यदेव सूचितम्। मदालसा किं श्रुतं त्वया यद् गुरुवर्यैः माम् अधिकृत्य पित्रे कथितम्? कुण्डला अथ किम्? राजकुमारी मदालसा सर्वविद्या निष्णाता जाता, परं तया स्वयं वरः न प्राप्तः, अतः तस्यै योग्यवरस्य अन्वेषणं कार्यम् इत्यासीत् गुरुपादानां मतम्। मदालसा हसित्वा न हि जानन्ति ते यद् अहं तु विवाहबन्धनं स्वीकर्तुं न इच्छामि। कुण्डला किं करिष्यसि तदा? मदालसा ब्रह्मवादिनी भविष्यामि। आचार्येति पदं प्राप्य शिष्येभ्यः जीवनकलां शिक्षयिष्यामि। कुण्डला जाने तेऽभिरुचिम् अध्ययने अध्यापने च, परं यथा लतेयं सहकारम् अवलम्बते तथैव नारी जीवनयात्रायां कमपि सहचरम् अपेक्षते यः तस्याः अवलम्बनं स्यात्। मदालसा नास्ति मत्कृते आवश्यकता अवलम्बनस्य। स्वयं समर्था जीवनपथे चलितुम् अहं न कस्यापि सङ्केतैः नर्तितुं पारयामि। कुण्डला नर्तिष्यसि तदा एकाकिनी एव? पृष्ठसङ्ख्या 74 मदालसा विहस्य यदि त्वं शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि तदा एकाकिनी भविष्यामि, परम् एकः उपायः अपि चिन्तितः मया। कुण्डला कः उपायः? मदालसा सङ्गीतसाहित्यमाध्यमेन ब्रह्मविद्यां सरसां विधाय बहुभ्यः शिशुभ्यः शिक्षणं प्रदास्यामि। कुण्डला गृहस्थाश्रमं प्रविश्य स्वशिशूनां चरित्रनिर्माणं मातुरधीनं, तत्र का विचारणा? यथाहं पश्यामि पुरुषः भार्यायां स्वाधिपत्यं स्थापयति, द्रौपदीं स्वीयां सम्पत्तिं मन्यमानः युधिष्ठिरः तां द्यूते हारितवान्, यथा सा निर्जीवं वस्तु आसीत्। कुण्डला निर्जीवं तु नासीत्, परं युधिष्ठिरस्य एषा एव चिन्तनसरणिः आसीत् इति प्रतीयते। मदालसा
हरिश्चन्द्रः स्वपत्नीं शैव्यां पुत्रं रोहितं च जनसङ्कुले आपणे विक्रीतवान्। नास्ति मे मनोरथः ईदृशं पत्नीपदम् अङ्गीकर्तुम्। कुण्डला कटु सत्यं खलु एतत्। परं सखी, अस्मिन् संसारे विभिन्नप्रकृतिकाः पुरुषाः वसन्ति। स्वप्रकृत्यनुकूलः वरः अपि प्राप्यते। त्वं तु नवनवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया विहितैः नूतनैः प्रयोगैः अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। गृहस्थाश्रमोऽपि एका प्रयोगशाला, यस्यां त्वं स्वज्ञानविज्ञानयोः प्रयोगं कर्तुं शक्ष्यसि। मदालसा कुण्डले दुर्लभो जनः ईदृशः यः गृहस्थप्रयोगशालायां स्वपत्न्यै स्वतन्त्रतां दद्यात्। ऋतध्वजः स्वगतम्। अवसरोऽयम् आत्मानं प्रकाशयितुं। प्रकाशम्। उपस्थितोऽहं शतुजितः पुत्रः ऋतध्वजः। आज्ञा चेत् अहमपि अस्यां परिचर्चायां सम्मिलितो भवेयम्। कुण्डला स्वागतम् अतिथये। अपि श्रुताः भवद्भिः मम सखी विचाराः? पृष्ठसङ्ख्या 75। ऋतध्वजः आम्, अत एव प्रष्टुम् उत्सहे किं गन्धर्वराज विश्वावसुमहाभागाः अपि स्वपत्नीं युधिष्ठिर इव हारितवन्तः हरिश्चन्द्र इव विक्रीतवन्तः? कुण्डला मदालसे तूष्णीं किमर्थं तिष्ठसि? देहि प्रत्युत्तरम्। ऋतध्वजः एकस्य अपराधेन सर्वा जातिः दण्ड्या इति विचित्रो न्यायः तव सख्याः। मदालसा अत्र भवन्तः नारीस्वाधीनताम् अधिकृत्य किं कथयन्ति? ऋतध्वजः माता एव प्रथमा आचार्या इति अस्ति मे अवधारणा। नारी एव समस्तसृष्टेः निर्मात्री। परं कथनेन किं? परीक्ष्य एव ज्ञास्यति अत्र भवति। परीक्षार्थम् उद्यतोऽस्मि गृहस्थाश्रमप्रयोगशालायाम्। मदालसा स्वीकृतः प्रस्तावः। कुण्डला दिष्ट्या वर्धेथां रिपीट। कुण्डला दिष्ट्या वर्धेथां युवां। मित्रवर गन्धर्वकन्या मदालसा गान्धर्वविवाहविधिना वृणोति अत्र भवन्तम्। आकारये अहं कुलगुरुं तुम्बुरुम्। असौ अग्निं साक्षीकृत्य आशीर्वचांसि वक्ष्यति। ऋतध्वजः प्रथमं तु सखीवचनं श्रोष्यावः, तदनु स्वयमेव कुलगुरुं पितरौ च सभाजयितुं गमिष्यावः। कुण्डला परस्परम् अनुव्रतौ पतिपत्न्यौ त्रिवर्गं साधयतः पतिः यदि प्रभूतं धनम् अर्जयित्वा गृहम् आनयति तत् खलु पत्न्यभावे कुपात्रेषु दीयमानं क्षयमेति। ऋतध्वजः लक्ष्म्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः। मदालसा कुण्डले लक्ष्मीपूजायां न मे प्रवृत्तिः। यदि लक्ष्मीः पूज्या प्रिया च अतिथिवर्यस्य क्यों अतिथिर्वयस्य आ रहा है बार-बार? अतिथिवर्यस्य रिपीट एक बार। यदि से शुरू करिए। अतिथिवर्यस्य यदि से शुरू करिए, पूरा से मत लीजिए। ठीक है। यदि लक्ष्मीः पूज्या प्रिया च अतिथिवर्यस्य तदा इदानीमेव मे नमस्कारः। ऋतध्वजः स्वाभिमानिनि प्रिये, समक्षं ते कथं कापि सपत्नी स्थातुं शक्नोति? लक्ष्मीस्तु तव दासी भविष्यति, नैव सपत्नी। मद्गार्हस्थ्यं तु त्वदधीनं भविष्यति। आत्मानं भाविसन्ततिं च ज्ञानविज्ञानानुसन्धात्र्या हस्ते समर्पयितुम् ईहे। आगम्यतां गुरुभ्यः पितृभ्यां च समाचारं श्रावयावः। पृष्ठसङ्ख्या 76। शब्दार्थाः टिप्पण्यश्च। राजोद्यानं राजा उद्यानम, राज्ञः उपवनम, राजा का उद्यान। आम्रमञ्जरीणाम् आम्रस्य मंजरीणाम, षष्ठी तत्पुरुष। आम की बौरों का।
मधुरवचांसि मधुराणि वचांसि कर्मधारय मधुर वचनों को। यूनः युवन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन तरुणस्य युवक का। रमणीनां स्त्रीणाम युवतियों का। आलाप इव आलापः इव वार्तालाप सा। रता रम त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन संलग्नाः तत्पर। श्रूयते श्रु कर्मवाच्य लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन सुना जाता है। स्थित्वा स्था त्वा ठहर कर। कियन्तं कियत द्वितीय विभक्ति एक वचन कुछ। अनन्तपारो न अंतपारौ यस्य सह बहुव्रीहि समासः आदि अंतरहित। गभीरश्च गभीरः च गंभीर। कतिपयबिन्दवः कतिपये बिंदवः कर्मधारय कुछ अंश। सूचितं सूच त निवेदितम सूचित किया। सर्वविद्यानिष्णाता सर्वासु विद्यासु निष्णाता तत्पुरुष सभी विद्याओं में निपुण। जाता जन त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन हो गई है। अन्वेषणं अनु इश लुट नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन गवेषणम खोज। ब्रह्मवादिनी ब्रह्म वदितुं शीलं यस्याः सा ब्रह्मन् वद णिच णिनि स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन वेदांत में निपुण। प्राप्य प्र आप त्वा ल्यप अधिगत्य पाकर। शिक्षयिष्यामि शिक्ष णिच रिट उत्तम पुरुष एक वचन शिक्षा दूंगी। तेभिरुचिं ते अभिरुचिम तुम्हारी लगन को। अध्ययने अधि इ ल्युट सप्तमी विभक्ति एक वचन पठने पढ़ने में। अध्यापने अधि इ णिच ल्युट सप्तमी विभक्ति एक वचन पाठने पढ़ाने में। अपेक्षते अप ईक्ष लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन आवश्यकता का अनुभव करती है। पृष्ठ संख्या 77 जीवन पथे जीवनस्य पन्थाः जीवनपथः षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् जीवनमार्गे जीवन के रास्ते पर। नर्तितुम नृत धातु तुमन प्रत्यय नाचने के लिए। एकाकिनी एकाकिन स्त्रीलिंगी प्रथमा विभक्ति एक वचन अकेली। सरसाम रसेन सहिताम बहुव्रीहि समास रसयुक्त। विधाय वि धा त्वा ल्यप कृत्वा करके। स्वाधिपत्यम स्वस्य आधिपत्यम षष्ठी तत्पुरुष अपना स्वामित्व। हारितवान ह्री णिच तवत् पुल्लिंगी प्रथमा विभक्ति एक वचन हर्वा दिया। युधिष्ठिरस्य युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः अलुक तत्पुरुष समास तस्य। सरणिः मार्गः रास्ता। प्रतीयते प्रति उपसर्ग ई धातु कर्मवाच्य लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन प्रतीतो भवति प्रतीत होता है। जनसंकुले जनैः संकुले तृतीया तत्पुरुष भीड़ से भरे हुए। विभिन्न प्रकृतिकाः
विभिन्न प्रकृतिः येषां ते बहुव्रीहि समास। भिन्न स्वभावः भिन्न भिन्न स्वभाव वाले। स्वप्रकृत्यनुकूलः स्वप्रकृति अनुकूलः स्वस्य प्रकृत्या अनुकूलः अपने अनुकूल स्वभाव वाला। नवनवोन्मेषशालिन्या नवनवेन उन्मेषेण शालते या सा तया नई नई चमक वाली। विस्मापयसि वि उपसर्ग स्मै धातु णिच लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। चकितम करोषि आश्चर्यचकित कर रही हो। शक्ष्यसि शक धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन समर्थ होंगे। प्रष्टुम प्रच्छ तुमुन पूछने के लिए। अवधारणा अव उपसर्ग ध्री धातु णिच ल्युट धारणा विचारधारा। निर्मात्री निर मा धातु त्रिच प्रत्यय स्त्रीलिंगी निर्माण करने वाली। आकारये आ उपसर्ग कृ धातु णिच लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन बुलाता हूँ। पितरौ माता च पिता च द्वंद्व माता और पिता। धर्मार्थ काम संसिद्धये धर्मः च अर्थः च कामः च धर्मार्थकामाः तेषां संसिद्धये धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए। पृष्ठ संख्या 78। पति पत्न्यौ पतिः च पत्नी च द्वंद्व समास पति पत्नी। दीयमानं दा धातु कर्मवाच्य। शानच नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन दिया जाता हुआ। समक्षम अक्ष्णोः सम्मुखम अव्ययी भाव समास। सपत्नी समानः पतिः यस्याः सा सौत। त्वदधीनं तव अधीनम षष्ठी तत्पुरुष समास तुम्हारे अधीन। ज्ञान विज्ञानानुसंधात्र्या ज्ञानस्य विज्ञानस्य च अनुसंधात्र्याः षष्ठी तत्पुरुष समास षष्ठी विभक्ति एकवचन ज्ञान विज्ञान की खोज करने वाली का। ई है ईह धातु लट लकार उत्तम पुरुष एकवचन चाहता हूँ। अभ्यासः प्रथमः प्रश्नः एकपदेन उत्तरत। क उद्यानं कस्य आसीत्। ख कः आम्रमञ्जरीणां शोभां दृष्ट्वा कूजति। ग का विद्याध्ययने रता आसीत्। घ का विनयं ददाति। ङ का सर्वविद्या निष्णाता आसीत्। च मदालसा किं स्वीकर्तुं न इच्छति। छ शिशूनां चरित्र निर्माणं कस्याः अधीनम्। ज कः भार्यायां स्वाधिपत्यं स्थापयति। झ युधिष्ठिरः कां द्यूते हारितवान्। ञ कः परिचर्चायां सम्मिलितः अभवत्। प्रश्न संख्या 2 पूर्णवाक्येन उत्तरं ददत। क कुलगुरुतुम्बरुः मदालसायाः विषये किं कथितवान्। ख मदालसा विवाहबन्धनं तिरस्कृत्य किं कर्तुमिच्छति। ग ऋतध्वजः स्वपरिचयं कथं ददाति। पृष्ठ संख्या 79। घ ऋतध्वजस्य नारीं प्रति का धारणा आसीत्। ङ कस्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः अस्ति। च ऋतध्वजः लक्ष्म्याः वर्णनं कथं करोति। प्रश्न संख्या 3 रेखांकितपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुरुत। क यूनोः हृदयम् उद्यानस्य शोभां दृष्ट्वा
उत्कण्ठितं भवति। अत्र यूनोः इति रेखाङ्कितं पदम्। ख मदालसा ज्ञानस्य कतिपयबिन्दून् एव प्राप्तवती। अत्र ज्ञानस्य इति रेखाङ्कितं पदम्। ग कुलगुरु तुम्बुरु महाभागैः गन्धर्वराजाय सूचितम्। अत्र गन्धर्वराजाय इति रेखाङ्कितं पदम्। घ मदालसा शिष्यान् जीवनकलां पाठयितुम् इच्छति। अत्र शिष्यान् इति रेखाङ्कितं पदम्। ङ मदालसा जीवने सङ्केतैः नर्तितुं न इच्छति स्म। अत्र सङ्केतैः इति रेखाङ्कितं पदम्। च पुरुषः भार्यायां स्वाधिपत्यं स्थापयति। अत्र भार्यायाम् इति रेखाङ्कितं पदम्। छ युधिष्ठिरः द्रौपदीं द्यूते हारितवान्। अत्र द्रौपदीम् इति रेखाङ्कितं पदम्। ज हरिश्चन्द्रः पुत्रं जनसङ्कुले आपणे विक्रीतवान्। अत्र पुत्रम् इति रेखाङ्कितं पदम्। झ अस्मिन् संसारे विभिन्नप्रकृतिकाः पुरुषाः वसन्ति। अत्र पुरुषाः इति रेखाङ्कितं पदम्। ञ लक्ष्म्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः। अत्र लक्ष्म्याः इति रेखाङ्कितं पदम्। प्रश्न संख्या 4 विशेषणं विशेष्येण सह योजयत। अत्र स्तम्भद्वयम्। प्रथमे स्तम्भे विशेषणानि सन्ति, द्वितीये स्तम्भे विशेष्याणि सन्ति। प्रथमस्तम्भे तावत् विशेषणपदानि सन्ति। क गभीरः, ख सर्वविद्यानिष्णाता, ग विभिन्नप्रकृतिकाः, घ निर्जीवं, ङ जनसङ्कुले, च शत्रुजितः, छ अनुव्रतौ, ज प्रभूतम्। विशेष्यपदानि धनं, ऋतध्वजः, आपणे, ज्ञानोदधिः, पुरुषाः, मदालसा, वस्तु, पतिपत्न्यौ। पृष्ठसङ्ख्या 80। प्रश्नसङ्ख्या 5 प्रकृतिप्रत्यययोः विभागं कुरुत। उदाहरणं स्थातुं स्थाधतु तुमुन् प्रत्ययः। तथैव अन्ये शब्दाः सन्ति यत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः करणीयः। क दृष्ट्वा, ख श्रुत्वा, ग स्थित्वा, घ अधिकृत्य, ङ स्वीकर्तुं, च नर्तितुं, छ विधाय, ज मन्यमानः, झ कर्तुं। ञ रक्षितव्या। प्रश्नसङ्ख्या 6 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति। उदाहरणतया त्वं तु केवलं विद्याध्ययने एव रता। कः कथयति? मदालसा। कं प्रति कथयति? कुण्डलां। तथैव अधोलिखितानि वाक्यानि दीयन्ते। क आचार्यापदं प्राप्य शिष्यान् जीवनकलां शिक्षयिष्यामि। ख नारी जीवनयात्रायां कमपि सहचरम् अपेक्षते। ग अहं न कस्यापि सङ्केतैः नर्तितुं पारयामि। घ किं गन्धर्वराज विश्वावसु महाभागाः अपि स्वपत्नीं युधिष्ठिरः इव हारितवन्तः, हरिश्चन्द्र इव विक्रीतवन्तः। ङ एकस्य अपराधेन सर्वा जातिः दण्ड्या इति विचित्रो न्यायः तव सख्याः। प्रश्न संख्या 7 हरिश्चन्द्रः समाजे कैः गुणैः प्रसिद्धः आसीत्। प्रश्नसङ्ख्या 8 नारीं प्रति ऋतध्वजस्य
का धारणा आसीत्? पृष्ठ संख्या 81 योग्यता विस्तारः। मदालसा पौराणिककथासु आदर्शनार्या उदाहरणं प्रस्तौति। तया स्वपुत्रस्य चरित्रनिर्माणाय महान् प्रयासः कृतः। तथा हि शैशवे पुत्राय कथितः तस्याः अयं श्लोकः निद्रागीतेः लोरीगीतेः प्रसिद्धम् उदाहरणम्। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसावाक्यमुवाच पुत्रम्। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां मदालसावाक्यमुवाच पुत्रम्।